A very good morning to all of you students. In previous few video, we had completed the chapter number 6, Attitude and Social Cognition. So now today we start a new chapter, chapter number 7, Social Influences and Group Processes. This is your new chapter and this is your last chapter. Okay. After this chapter your syllabus is completed. So this is the chapter number 7, Social Influences and Group Processes. In this chapter you study about the concept of group, that's mean the what is group, nature of group, the characteristics of group, then the types of group formation, how we form the group, what are the factors which influence the group formation process. Then the social influences. In social influences there is a concept of social looping, social polarization and the social inhibition and facilitation which you had already studied in chapter 6. After that, the concept of conformity, compliance and obedience, these are also known as the group processes in the context of the social influences. Then the cooperation and competition, which are very interesting topic. Then social identity, how we form a social identity, and the intergroup conflict. Okay, why the groups are sometimes not adjust with each other and the conflicts arise, and what are the nature of this type of conflicts and how we resolve it. So this is the last section of the chapter 7. So this is all about the chapter 7. Briefly कि क्या-क्या हम इसमें क्या-क्या interesting points है जो हम इसमें पढ़ेंगे, क्या-क्या कॉन्सेप्ट है जो हम अंडरस्टैंड करेंगे इन द चैप्टर 6. तो बेसिकली ये जो चैप्टर है ये ग्रुप से रिलेटेड है कि हम किस तरह से ग्रुप फ्रेम करते हैं, व्हाई ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड हाउ वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप. ठीक है, एंड दिस इन्फ्लुएंसेस इज नॉट ओनली वन साइडेड, दीज आर द बोथ साइड से हम इन्फ्लुएंस करते हैं. सिर्फ ग्रुप हमें इन्फ्लुएंस नहीं करता बल्कि हम भी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द बोथ साइड का इंटरेक्शन होता है ये. So let's start your chapter number 7, nature and formation of group. So today you studied about the nature and formation of group. First of all, what is a group? So this is basically group is important for us, and one question that comes to mind is how are groups, that means your family, class, your play group or any others, different from other collection of peoples. Okay, on which basis we can say that this is the group. Okay, definitely when you are talking about the cricket match there is a lots of peoples which is also known as basically the audience. Okay, and if you are talking about the any kind of annual function in your school, there are also a gathering of the peoples, but this is not a group. Okay, so difference from other collection of people, this is the question, how group is different from the other collections of people. For example, people who have assembling to watch a cricket match or your school functions are at one place but are not interdependent on each other, and they do not have defined roles, status and expectations from each other. In the case of your family, class and the group with which you play, you will realize that there is a mutual interdependence and each member has roles. There are status differentials and there are expectations from each other. So thus your family, class and playgroup are examples of group and are different from other collection of people. So let's discuss the definition of group. Sorry. A group may be defined
as an organized system of two or more individuals who are interacting and interdependent interacting and interdependent who have common motives, have a set of roles, relationship among its member and have norms that regulate the behaviors of its member. So this is the definition of a group. A group may be defined as an organized system of two or more individuals who are interacting and interdependent and who have common motives, have a set of roles, relationship among its members and have norms that regulate the behavior of its members. ठीक है, so this is the definition. क्या है group? बेसिकली ये कलेक्शन है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसके बेसिस पे टू और मोर इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में सिचुएटेड होते हैं, एक कलेक्शन बनाते हैं दो और उससे ज्यादा मेंबर्स, और इसमें क्या होता है, टू और मोर मेंबर एंड हु आर इंटरैक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे से इंटरैक्शन करते हैं, एट द सेम टाइम दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं वो, एंड who have common motives and have a set of roles. ठीक है, उनमें कुछ common motives होते हैं जिससे इन्फ्लुएंस होके वो गैदरिंग करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इंटरैक्ट करते हैं. So they have a common motives at the same time they have a set of roles. उन हर इंडिविजुअल्स का, हर मेंबर्स का उस ग्रुप के कुछ रोल्स डिसाइड होता है, कुछ स्टेटस होता है उस ग्रुप का, उसके मेंबर्स का कुछ रोल्स होता है, and relationship among its member and have norms that regulates the behavior of its members. ठीक है, डेफिनेटली वहां पे जो रिलेशनशिप होती है मेंबर्स की, वो एक वेल डिफाइंड वे में होती है कि किस तरह की रिलेशनशिप होगी उनके अंदर, उनके बिटवीन, एंड कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो नॉर्म्स जो उनके बिहेवियर को गवर्न करते हैं, उनके बिहेवियर को के लिए एक गाइडलाइन देते हैं कि हाउ यू बिहेव इन अ विच मैनर. सो डेफिनेटली वहां पे कुछ नॉर्म्स होते हैं जो उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, उन्हें एक बेस लाइन देते हैं जिसके थ्रू अपना वो बिहेवियर करते हैं. सो दिस इज द ग्रुप. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेफिनेशन देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप. क्या क्या हो सकती हैं वो? सी,
So a group may be defined as an organized system of two or more individuals who are interacting and interdependent and who have common motives and have a set of roles, relationship among its members, and have norms that regulate to behavior of its members. And groups have the following silent characteristic. First is a social unit consisting of two or more individuals who perceive themselves as belonging to the group. So this characteristics of the group helps in distinguish one group from the other and give the group its unique identity. ठीक है, दैट्स मीन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सोशल यूनिट है जहाँ पे टू और मोर देन टू पीपल्स जो होते हैं वो गैदरिंग करते हैं, कलेक्ट होते हैं, एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं. एंड यही वो फीचर्स है जिसके बेसिस पे हर ग्रुप अपनी यूनिकनेस को मेंटेन रखता है, क्योंकि उसके जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट है, उनका मोटिव्स डिफरेंट है और वो एक डिफरेंट वे में रिलेशनशिप बॉन्ड करते हैं, एक ग्रुप फ्रेम करते हैं. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप. देन मूव टू द सेकेंड. So a collection of individuals who have common motives and goals. Group function either working towards a given goal or away from certain threat facing the group. ठीक है, डेफिनेटली ये जो ग्रुप होता है इसमें कहीं ना कहीं जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के उनका कुछ कॉमन मोटिव्स होता है. कॉमन मोटिव्स दैट्स मीन ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप आर मतलब वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं बिकॉज उनका जो मोटिव रहता है, जो नीड रहती है वो कॉमन रहती है. या तो इसके थ्रू वो कुछ कॉमन मोटिव्स के थ्रू किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं या किसी थ्रेटनिंग सिचुएशन या किसी ऐसी सिचुएशन से जो बेसिकली थ्रेट जो कि स्टार्ट करे उस सिचुएशन से वो बचने की कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं. ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड फीचर ऑफ अ ग्रुप. देन third is a collection of individuals who are interdependent. That is, what one is doing may have consequences for others. And suppose one of the fielder in a cricket team drop an important catch during a match, so this will have consequence for the entire team. So that's mean the members of the group are interdependent. ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं और किसी एक का जो भी बिहेवियर रहता है वो उस बिहेवियर के इन्फ्लुएंस से जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो पूरे ग्रुप को सफर करने पड़ते हैं, पूरे ग्रुप के लिए वो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिकेट मैच की बात करो तो डेफिनेटली अगर एक विकेट कीपर एक कैच ड्रॉप कर देता है सो उससे मैच विन हो सकता है या मैच लॉस हो सकता है. इसके लिए पूरी टीम को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, पूरी टीम जो है वो उसे ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं. सो दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रुप. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई a need through their joint association also influence each other. ठीक है, that's mean आपने अभी just पढ़ा in the second point, there are some common motives, so there are some common needs also, and through this need they join a association. एक दूसरे से associated होते हैं, एक दूसरे से connected रहते हैं because इसके through उनकी कुछ needs, कुछ psychological and कुछ biological needs जो है, basically psychological needs जो है वो fulfill होती है और वो इसी एम से, इसी ऑब्जेक्टिव से एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं. एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, एक दूसरे की नीड्स जो है वो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं. नेक्स्ट इज अ गैदरिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु इंटरैक्ट विथ वन अनदर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, दैट्स मीन जो ये गैदरिंग ऑफ पीपल है जिसके थ्रू एक ग्रुप जनरेट हुआ, एक ग्रुप फॉर्म हुआ है, वो डेफिनेटली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फ्रेम करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, आइदर इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, दैट्स मीन यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है. नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हुज इंटरैक्शन आर स्ट्रक्चर्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स. This means that the group members perform the same functions every time the group meets, and the group members adhere to group norms, and norms tell us how we ought to behave in the groups.
and specify the behaviors expected from group members. That's mean in the any group, ठीक है, each and every group में कुछ written और कुछ verbal norms होते हैं. उस norms के basis पे हर member जो उस group का है उसका कुछ role decided होता है, and definitely उस roles के basis पे other group members का उस particular individual के लिए कुछ expectation होता है. ठीक है, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके बेसिस पे सबका वर्क, सबका जो वर्क है वो डिफाइंड होता है. एट द सेम टाइम उस इस वर्क के लिए उनका एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन भी होता है. सो दिस इज द नॉर्म्स आर बेसिकली वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द ग्रुप, और वही इस ग्रुप को बेसिकली एक स्ट्रक्चर देते हैं, एक सेट ऑफ रोल्स एंड नॉर्म्स के लिए. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ ग्रुप, और यू कैन से द characteristics of group, on which basis we can say this is the group. Groups can be differentiated from other collection of people, for example a crowd and a team. ठीक है, so ये later on करेंगे. First of all, once again discuss the characteristics of group. So this is the definition. Move to the characteristics. Characteristics. First characteristic क्या है ये? A social unit consisting of two or more individuals. So this is a social unit. ये एक social unit है जहाँ पे दो और दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, तभी तो ग्रुप फॉर्म होता है. सेकेंड इज a collection of individuals who have common motives and goals. So definitely common motives and goals. ठीक है, दैट्स मीन ये जो ग्रुप होता है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनमें कुछ कॉमन मोटिव्स होता है और कुछ एक गोल की तरफ वो ओरिएंटेड होते हैं, उस वे में उनका बिहेवियर होता है. सो डेफिनेटली कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स. नाउ थर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर इंटरडिपेंडेंट. सो थर्ड पॉइंट इज इंटरडिपेंडेंस. दैट्स मीन वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर पे या बाकी सारे मेंबर्स के बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर एक सर्टेन वे में बिहेवियर नहीं कर रहा है डिजायरेबल वे में, सो डेफिनेटली उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो सबको देखने होंगे. सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. इंडिविजुअल्स हु आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई अ नीड थ्रू देयर जॉइंट एसोसिएशन आल्सो इन्फ्लुएंस ईच अदर. सो दैट्स मीन जो नीड होती है वो फुलफिल होती है और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है. So the fourth point is need fulfillment. Need fulfillment and influence each other. Next is a gathering of individuals who interact with one another either directly or indirectly. ठीक है, मतलब वो जो एक दूसरे को interact करते हैं वो या तो डायरेक्टली हो सकता है या इनडायरेक्टली. सो इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स directly or indirectly.
ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, a collection of individuals whose interaction are structured by a set of roles and norms. That means यहाँ पे कुछ set of roles and set of norms होते हैं. So definitely in a group there are set of roles and norms. So there are 5 characteristics of a group. किसी भी ग्रुप में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए. ये 5 फीचर्स इंपॉर्टेंट है किसी भी कलेक्शन ऑफ पीपल्स को ग्रुप कहने के लिए. ठीक है. सो क्या है? अ सोशल यूनिट विद 2 और मोर इंडिविजुअल. दैट्स मीन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज सिस्टम है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक मेंबर्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी गैदरिंग होती है, एक सोशल यूनिट के रूप में वो फॉर्म होते हैं. सेकेंड इज वो जो मेंबर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनका कुछ कॉमन मोटिव्स होता है, कुछ कॉमन गोल्स होता है. देन वो मेंबर्स आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहते हैं. नॉट इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट. ठीक है. इंडिपेंडेंट रहते हैं. दैट्स मीन एक का बिहेवियर दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं वो. देन नीड फुलफिलमेंट एंड इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. ठीक है. वो इसी ग्रुप के थ्रू, इसी रिलेशनशिप के, इसी इंटरेक्शन के थ्रू अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करते हैं. एट द सेम टाइम वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के नीड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन नेक्स्ट इज इंटरेक्शन बिटवीन पीपल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डेफिनेटली अगर एक ग्रुप है और उसके कुछ मेंबर्स हैं, सो वो आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ रोल्स एंड नॉर्म्स. तो डेफिनेटली कोई अगर ग्रुप होता है तो उसमें कुछ रिटन और वर्बल कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनके मेंबर्स का कुछ रोल्स होता है, कुछ स्टेटस होता है उस ग्रुप का, और इसके बेसिस पे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. एट द सेम टाइम अदर मेंबर्स का एक्सपेक्टेशन होता है उस ग्रुप के अदर मेंबर्स से. ठीक है. So these are the features, these are the characteristic of a group. Group क्या है? एक collection of peoples. ठीक है. A systematic organized collection of peoples जहाँ पे कुछ written norms होते हैं, कुछ goals होते हैं, कुछ common motives होते हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे से connected रहते हैं, एक दूसरे को influence करते हैं, एक दूसरे पे interdependent रहते हैं. ठीक है. Directly या indirectly communicate करते हैं, interact करते हैं. So these are the property, these are the characteristic of group. Move to the next topic. So next topic, that's mean group से similar कुछ terms हैं like crowd, then team. So how the team and the crowd are different from the group. Group से किस तरह से ये different है. So first of all, you understand the group. What is group? What is the definition of group and what are the characteristics of group. Now move to the how the team and the crowd are different from the group. Crowd and team. ठीक है. ये किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. So group can be differentiated from other collection of peoples. For example, crowd is also a collection of peoples who may be present at a place, situation by chance. Suppose you are going on the road and an accident take place. So soon a large number of people tend to collect, and this is an example of a crowd. ये typical example है crowd का, and there is neither any structure or nor feeling of belongingness in a crowd, and behavior of people in crowd is irrational and there is no interdependence among members. ठीक है. जो crowd है, this is also a collection of peoples, but वहाँ पे इस
क्राउड का ना ही कोई स्ट्रक्चर है, ना वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, ना कुछ नॉर्म्स है, ना कुछ रोल्स है, ठीक है। जो रिलेशनशिप है वो भी बहुत ही वेल डिफाइंड और इंटरैक्टिव वे में नहीं है, इंटरडिपेंडेंट वे में नहीं है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से क्राउड इज डिफरेंट फ्रॉम दी ग्रुप। ग्रुप में तो कुछ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है ग्रुप का, कुछ इंटरडिपेंडेंस होता है, वहाँ उसके मेंबर्स का कुछ नॉर्म्स होते हैं, रोल्स होते हैं। सो डेफिनेटली क्राउड में ये चीजें नहीं होती, ठीक है। कुछ कॉमन मोटिव्स नहीं होता, कोई कॉमन गोल्स नहीं होता। सो डेफिनेटली क्राउड जो है वो डिफरेंट होता है ग्रुप से। नाउ टीम क्या है? टीम आर स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ ग्रुप। Members of team often have complementary skills and are committed to a common goal or purpose. And members are mutually accountable for their activities. So in team, there is a positive synergy attained through the coordinated effort of the members. And the main difference between group and team are, ठीक है, दैट मीन जो टीम है वो भी एक तरह का ग्रुप ही है, बट डेफिनेटली वो ग्रुप से कुछ टर्म्स में डिफरेंट है। सो वो क्या क्या टर्म्स है जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ग्रुप जो है वो टीम जो है वो ग्रुप नहीं है। फर्स्ट इज इन ग्रुप परफॉर्मेंस इज डिपेंड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स मेंबर्स, एंड इन टीम बोथ इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन एंड टीम वर्क मैटर, ठीक है। ग्रुप में आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो शो नहीं होती, वो एक्सप्रेस नहीं होती, वो कहीं ना कहीं उसी में मिल जाती है, ठीक है। बट इन टीम आपकी सोशल आइडेंटिटी भी मेंटेन रहती है, एट द सेम टाइम आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मेंटेन होती है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट मैच में जो क्रिकेट टीम होती है, सो डेफिनेटली आपका इंडिविजुअल स्कोर भी मैटर करता है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ऐड होता जाता है। एट द सेम टाइम वो हमारे ग्रुप के लिए भी एक प्रॉफिटेबल स्कोर होता है, उसके थ्रू ग्रुप भी डिसाइड करता है कि वो विन करेगा या नहीं। सो दिस इज द first difference between the group and the team. Second is in group the leader or however is heading the group hold responsibility for the work. However in team, although there is a leader, member hold themselves responsible. ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इन ग्रुप लीडर और however is heading the group hold responsibility for the work. However in team, although there is a leader, member hold themselves responsible, ठीक है। दैट्स मीन जो ग्रुप होता है वहां पे कोई लीडर हो सकता है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो उस ग्रुप को लीड करे और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले। बट इन दी टीम ऐसा नहीं होता। टीम में भी डेफिनेटली एक लीडर जरूर होता है, बट they are not only responsible for the responsibilities, ठीक है। So वो सिर्फ responsible नहीं होता है। So this is the team. Next term is the audience. There is a missing term is audience. ठीक है। So audience is also a collection of people who have assembled for a special purpose and maybe to watch a cricket match or a movie. So audience are generally passive, but sometimes they go into a frenzy and become mobs. So in mobs, there is a definite sense of purpose. There is a polarization in attention, and action of purpose are in a common direction. So mob behavior is characterized by homogeneity of thought and behavior as well as impulsivity. ठीक है। So audience के context में एक और term है mob. So how is the audience in the mob? ऑडियंस एक कॉमन टर्म है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी वॉच करने जा रहे हो या क्रिकेट मैच वॉच करने जा रहे हो, सो डेफिनेटली द कलेक्शन ऑफ पीपल्स इज नोन एज ऑडियंस। बट ऑडियंस समटाइम मूव का रूप भी ले सकती है। मूव जो है वो बेसिकली थोड़े से इम्पल्सिविटी हो जाती है। होम्योजेनिटी ग्रुप है, एक कॉमन मोटिव रहता है, कॉमन डायरेक्शन रहता है एक्शन का। सो दिस द मूव। सो टुडे यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ group, the nature of group, the definition of group, and the 6 important characteristics of group, in which basis we can say this is the group, and how the group is different from the different terms like audience, mob, crowd and teams. तो किस तरह से ये इससे different है. So this is all about today
your chapter 7 is started today. ठीक है, chapter 7 start हुआ है and we will continue chapter 7 and continue other topics in next video. Thank you so much students.